welcome to a new video. Now this is the second part of my previous vlog. I'm actually vlogging my entire day and surprisingly आज का दिन इतना hectic turnout हो गया. I have done so many things, so I had to divide it into two parts. Part 1 is already up. Check it out here. Now for the second part, I'm just going to go cook my lunch. I have a very short time जिसमें मुझे अपना लंच प्रिपेयर करना है एंड देयर इज दिस वन स्पेगेटी रेसिपी दैट आई मेक जो कि लिटरली टेक्स 10 मिनट्स एंड इट्स सो गुड. तो मैं सोची थी फटाफट से जाके अपने लिए वो बना लेती हूँ. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड टू पुट योर स्पेगेटी टू बॉईल. तो बस एक पैन में पानी लो, थोड़ा सा उसमें नमक डालो, थोड़ा ऑलिव ऑयल एंड देन पुट इन योर स्पेगेटी एंड लेट इट कुक फॉर 12 to 15 minutes. नाउ दिस टाइम आई एम मेकिंग दिस मिक्स सॉस स्पेगेटी विथ चिकन इन इट क्योंकि मुझे थोड़ा प्रोटीन भी चाहिए था. चिकन के लिए आई जस्ट डाइस्ड इट इनटू स्मॉलर पीसेज एंड बस उसको पैन फ्राई कर लिया, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट और पेपर डाल के. नाउ यू हैव टू चॉप सम वेजीज. वैसे बहुत बेसिक वेजीज है, सिर्फ लहसुन और प्याज मैंने काटा है. यूजुअली आई यूज चेरी टोमेटोज एज वेल, बट अभी थे नहीं घर पे अवेलेबल. मैं नेक्स्ट टाइम आपको चेरी टोमेटोज के साथ दिखाऊंगी ये रेसिपी, उससे भी बहुत अच्छा बनता है. बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू टेक सम ऑयल इन अ पैन. उसमें थोड़ा सा अपना गार्लिक डाल लिया, अनियन को थोड़ा सा बारीक से चॉप करना एंड लेट बोथ दीज थिंग्स कुक फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद यू हैव टू ऐड इन योर पास्ता सॉस. आप खुद से भी बना सकते हो बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, इसलिए मैंने तो ये रेडी टू मेड पास्ता सॉस यूज़ किया है. उसको ऐड करो, 2 सेकेंड के लिए बस उसको हीट अप होने दो एंड देन ऐड इन सम पास्ता वाटर. दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. और सॉसेस के लिए हमेशा मेक श्योर दैट यू आर सेविंग योर पास्ता वाटर. अब मैंने बहुत सारी सीजनिंग डाली है लाइक सॉल्ट, पेपर, पार्सली, ऑरिगेनो, पिज्ज़ा सीजनिंग एंड रेड चिली फ्लेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई हैव एडेड इन माई सोर्स ऑफ प्रोटीन हियर. दिस इज़ ऑब्वियसली ऑप्शनल बट मैंने थोड़ा चिकन डाल दिया. मैंने थोड़ा सा मिल्क डाला है इसमें and then a slice of cheese. Let it all just come together very nicely and then add in your spaghetti. Let it cook for 2 more minutes and that's it. बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने देना उसको, थोड़ा सा सॉसी सी रखना. You can add in more cheese at the top. आप टेस्ट कर लो, आपको सीजनिंग कम लग रही तो add more of that. बट यार दैट्स इट. दिस इज़ आवर बोल फुल ऑफ स्पेगेटी जिसको मैंने इतने मज़े से और इतने फटाफट से खाया. एंड नाउ आई हैव टू क्लीन दिस मैसी किचन एज वेल. किचन की सफाई कर दी गई है. नाउ लेट्स गो गेट बैक टू वर्क. आई एम बैक. ओ माय गॉड, आई लुक लाइक अ मेस. इतना गर्म हो गया था ना किचन में. आई एम सो स्वेटी राइट नाउ बट आई हैव टू गेट बैक टू माय एडिट क्योंकि इट्स ऑलरेडी 2:15. शिट, एंड आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ. 5 बजे की वीडियो अपलोड भी करनी है. तो अच्छा, खाने के बाद काम करने का मन नहीं कर रहा है यार. इफ दैट हैपेंस विद यू एज वेल ना, टेल मी इन द कमेंट. My best friend. What a break. We start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick. Hi guys, it's been a few hours and everything that could go wrong is going wrong. Like मेरा दिमाग फटने वाला है पता है अभी. आई नीड टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन. सो द प्लान वाज कि मैं 5 बजे तक वीडियो अपलोड करके सब कुछ करके आई विल बी आउट ऑफ द डोर बाय 6. एसी चला लेती हूँ पहले मैं, बहुत दिन हो रहा है. बट इट्स 5:37 ऑलरेडी. अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, थंबनेल नहीं बना है एंड ऑब्वियसली उसके बाद मेरे को तैयार वगैरह भी होना पड़ेगा एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम वेयरिंग. और साथ साथ मेरे 1-2 एक्स्ट्रा काम आ गए थे कुछ ब्रांड्स वगैरह वाले. तो इट हैज बीन अ टफ hour and a half. मतलब पिछले 1-1.5 घंटे पे मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है, यू हैव नो आइडिया. बट फाइनली मेरी वीडियो रेडी हो चुकी है, अपलोड में जा रही है. मैं इसको अपलोड कर रही हूँ अभी एंड फटाफट साइड बाय साइड में फोन में थंबनेल भी बना रही हूँ ताकि दोनों काम साथ हो जाए. द प्लान इज कि वीडियो 6 बजे तक अपलोड हो जानी चाहिए कैसे भी. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली हो जाएगी. आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू टू वॉच इट. पता है ये वीडियो इतनी मुझे पर्सनली इसका एडिट बहुत पसंद आया है एंड आई होप आप लोग को भी आएगा. आपने ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट्स बताओ कि कैसी लगी. नहीं देखी है देन तो यू गाइज आर हर्टिंग मी बाय नॉट वॉचिंग. क्योंकि यू कैन सी द बिहाइंड द सीन्स. आई एम लाइक
so frustrated and irritated and irritated. On tall glasses of wine, practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every Guys, Roman's it is loving? finally up. नई वीडियो अपलोड हो चुकी है. It's the Myntra footwear haul, and अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो do check it out, and I'll be the first one to like it. This was an experience. I'm telling you, आपने जब लास्ट बात करी ना उसके बाद took me another half an hour to do everything and upload it, but finally up also सामने से ना इतनी बढ़िया बात ये सब golden hour, and now I'm thinking I'll get ready. Obviously मैं कोई shorts या कोई reel वगैरह भी film कर लूँगी while I'm getting ready, and I'll show you my final outfit after that. Also I have no idea what to wear. 20-something woman wants midnight in Paris. I've always heard there's magic in the air as you're watching people dance by sand. I have changed from one black outfit to another. So मैंने ये बहुत ही pretty सा top पहना है which I got from H&M like last to last year. नीचे से black pants पहने हैं, my favorite. And then I wear a pearl necklace to dress this up. बहुत छोटे से यहाँ पे gold hoops हैं. Then my white heels. I'll most probably carry like a white bag with this outfit. So I have filmed a reel on this. मैंने एक shorts भी film कर दिया. And now if I am being truthful with you, I am not like 100% proud of this outfit. I don't know, like I like it, but I'm like I can do more. I could have done better. लेकिन ना मेरे को बहुत लेट हो रहा है, 6:50 हो गया. I'm thinking I'll just leave by 7. So ठीक है, like we'll have to do with this outfit. I don't think I can even explain that properly. Like I like the outfit, but I don't like it. Do you get me? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? You like it but you don't like it? चलो छोड़ो, अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करती. If I overthink it too much फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. Also this is the makeup of the day. I think मैंने काफी सा blushy सा look रखा है, and मैंने ना वो वाली जो रहने की लिपस्टिक लिप ग्लॉस नहीं आया था वो लगाया है, but I don't think it's मिट गया है वो शायद ऑलरेडी. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ट्रस्टी my favorite nude nuance अप्लाई कर लेती हूँ. मच बेटर. ऑल्सो आई थिंक वो लिप ग्लॉस में बहुत जल्दी रिमूव हो गया था, या फिर वो बहुत लाइट सा है तो ज्यादा दिख नहीं रहा स्किन में. सो इस आउटफिट के साथ दैट वाज़न्ट गोइंग, बट या आई थिंक आई लीव नाउ. 12 seconds later. ओके गाइस, आई वाज़न्ट फीलिंग दैट टॉप. मुझे ना इतना तो गुस्सा आता है, आई वाज़न्ट लाइकिंग दैट आउटफिट एट ऑल. तो मैंने चेंज कर लिया. मैंने अपना पर्ल नेकलेस भी एक गोल्ड नेकलेस में स्विच कर लिया, एंड नीचे से पैंट्स और हील्स वैसे ही हैं. एंड दिस इज द टॉप नाउ, एंड आई लाइक दिस सो मच बेटर. मुझे बहुत गुस्सा आता था आउटफिट को देखकर, अच्छा नहीं लग रहा था, एंड आई वाज़न्ट फीलिंग गुड एंड कॉन्फिडेंट, बट नाउ आई फील गुड. ये मैंने पता रिपीट किया है, मैंने ये सेम आउटफिट पहले भी पहना हुआ है, लाइक द सेम पैंट्स एंड टॉप टुगेदर. एंड नो शेम इन रिपीटिंग क्लोथ्स गाइस. रिपीट आफ्टर मी. नो शेम इन रिपीटिंग क्लोथ्स. एंड अब मैं जाती हूँ कि अब तो बहुत make you meet someone special. Meet Divya Loni aka Debs, the 4th member of our group. आप रजनी से और रुचिका से मिल चुके हो. This is the 4th member. और सब आज तक मिले नहीं थे इतने दिनों से. मुझे कब से वेट हो रहा था कि ये आए और मैं व्लॉग करूँ, आप मिल पाओ. So hello. ये बैंगलोर पे रहती है कि अभी कुछ दिन के लिए, एंड हमें बहुत लेट हो रहा है तो हम निकलते हैं, वहीं मिलते हैं. रुचिका ने डेकोरेशन किया है. ओह डैम, अच्छा लग रहा है. There's a birthday boy. ओए होए, इसने पूरा केक तोड़ दिया है. मैंने सिखाया था, मैं ले आती. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges. ये यहाँ पे अटक नहीं रहा था तो जुगाड़ देखो हमारा. हमने वाज में बलून लगा दिया. Well, finally, can we wish you happy birthday? Oh, cutie. Magic in the air as you're watching
guys, time for an update. तो अभी 9 बज रहा है and 9:15 and we just came out for dinner, so we are going to this place called Skyjack. And yeah, मैं अभी आ गई हूँ, रुचिका लोग just पहुँच रहे हैं. Then we'll go up and have some dinner. 그렇듯 하루를 마치 이른 시간 되면 마치 만신창이 올라굴을 찾아 헤매다 보면 어느새 저기 날아가는 족새 어느 세월 따라잡지라는 생각만 두려워 족새 채워진 난 벙어리가 돼 이렇게 한참을 쫓다 지붕만 쳐다봤다 쫓던가 Stop it. Get some help. 아지의 심정 이제 정말 내 심정 질새 없이 날아드는 종말 견제 그룹이 이룰런바 싶지 않아 가끔 난 Run down 걸레 기도해 그래도 결코 포기할 수 없는 나만의 거리의 기도해 나만의 성이라는